Well done. Good job. अच्छा ठीक है, राधा आप पूछे। ओके, हिंदी में पहले फिर अंग्रेजी में। अंबेडकर जी का अंतिम प्रमुख कार्य कौन सा था? अंबेडकर जी फाइनल मेजर वर्क वाज, नेम ऑफ द वर्क क्या था? एक वहां हाथ उठा, पहले दीजिए माइक, वहां दीजिए पीछे। अंबेडकर जी फाइनल मेजर वर्क वाज, या कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक सवाल और, and this is again for the backbenchers, right? Let's try and get some more gifts to all. 1992। नहीं, गलत जवाब, सॉरी। अच्छा पीछे वो Now I request the chairperson of this session inaugural address on this particular topic, on the topic constitutional pathways to social justice development, realizing Dr. Ambedkar's vision in contemporary India. One in the first panel discussion asked about the artificial intelligence, the age of postmodern age, and etc. in the technology. How relevant the Constitution even to these days? May I request you, sir, to come over here and give your thoughts as an initial address. Thank you. At the outset, I congratulate and thank the Ministry of Social Justice for inviting us to share our few thoughts with all of you. Dear friends, the theme is about the living constitution, democracy, dignity, and development. 75 years. I wish to talk about that first for a while. When we talk about the living constitution, there are two theories about it. First one is originalism, second one is intertextualism. Originalism in a sense that the text as it is, whereas in case of intertextualism, as it is evolved over the period of years, particularly by the judicial interpretation and analysis according to the different provisions of the Constitution, that is intertextualism, wherein living constitution is the facet of the second one, that is intertextualism. Today is the day, and I extend my warm greetings to all of you. That is the Constitution Day, the day on which the Indian Constitution was adopted. It is a democracy development, democracy, dignity, and development. We are celebrating this day and moreover commemorating the contribution of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Constitution. The democracy which has been envisioned by him and ingrained in the Constitution, rather that is the theme also about the social justice, constitutional pathways. Democracy, as Dr. Ambedkar had pointed out, that first and foremost, all of us are aware about the definition of democracy as given by Abraham Lincoln. That is government for the people, of the people, and by the people. By Abraham. The democracy is nothing but the form of the government. Democracy is nothing but the form and method of the government whereby the revolutionary changes in social and economic lives of the people are to be brought without any bloodshed. It is a matter of introspection. I repeat the definition given by about the democracy. Democracy is the form and method of the government whereby revolutionary changes in social and economic lives of the people are to be brought without shedding a drop of blood. It is now the matter of introspection when we are celebrating 75 years, now 76 years, that to what extent we are able to bring revolutionary changes
in social and economic lives of the people, a person who is at the lowest wage. That is what. Then what he had said that it is not the political democracy, this is the definition of political democracy. Unless there lies at the basis of the political democracy or social democracy, it will not be survived. Society cannot be transformed. And according to him, the social democracy is nothing but the way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity. These are the three things: liberty, equality, and fraternity. There lies the notion of social justice. Social justice doesn't mean only for the marginalized sections, it is all inclusive. Hence, the second introspection we need to have is this, that firstly, whether that political democracy we are able to achieve. And secondly, whether this political democracy is resting on the pillar of social democracy. Are we really able to achieve this goal? That it is a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity. All of us took a oath today. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Generally, what happens that we, the law teachers and students, we so much emphasize upon three things, that is justice, equality, and liberty, ignoring, neglecting the fourth one, that is fraternity. Rather, fraternity is not only the goal, it is not only the concept, it is not only the philosophy. It has been made as a fundamental duty by virtue of Article 51A(e) small. We are obsessed with our fundamental rights. Rights are fundamental. What about the duties which are also fundamental? That's why the theme, I have a worthy panel, that is Constitutional Pathways to Social Justice, Inclusive Development, Realizing Dr. Ambedkar's Vision in Contemporary India. We look at the constitutional debates, we'll realize that, we'll come to know that the word backward, which we see today under Article 64, which wasn't there. It was not the backward class, it was rather the particular class. Article 10 of the draft Constitution. Wherein that word particular class was substituted with the word backward class, which was opposed by several members, which was put for the amendment, which was negative. Because the society herein, which was divided on the basis of caste, religion, region, I could see somewhere it is the constitutionalism, the notion of constitutionalism. Generally, it is not only the constitutionalism, it is the transformative constitutionalism. Though it is the name of Professor Clark Clare, who had published the paper Legal Culture and Transformative Constitutionalism in 1998, the real credit goes to Dr. Ambedkar. The Indian Constitution is transformative in character and nature right from its inception. That's why provisions like Article 15(3), 16, 17, 23, and whole gamut of Part 4, they are the facets of transformative constitution. In view of this, I will leave, because we have to wrap up the session at any cost at 4 o'clock, because we have to catch up our flight. So I leave this forum to my worthy panelists
to deliberate upon. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for your enlightening address to the audience, especially we always speak about fundamental rights, forgetting about fundamental duties. So as a citizen of this great country, let us take an oath that we should remember our duties rather than more on our rights. And thank you so much, sir. Now I request Ajita Acharya ji. You work with a lot of villages, you work at the ground. So what are the few application points we can take away from your address? Now, your time, sir. Good afternoon, everyone. I would like to jump to because the constitution discussion, so we will just jump urban area also. पर उससे पहले मैं कुछ और चाहता हूँ आपसे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो जरा हिंदी में करने से अच्छा लगता है ना? करूँ हिंदी में? क्योंकि अभी मैं खाना खा के आया हूँ, आप भी खाए ना? ठीक है, फिर सुनिए। लोकतंत्र संविधान से शासन का मंत्र है। लोकतंत्र संविधान से शासन का मंत्र है। 75 साल पुराना है, जिसको हम सब ने भी माना है। ये यंत्र नहीं जो खुद चलेगा, ये प्रजातंत्र है, जनमानस से चलेगा, लेकर साथ निरंतर चलेगा, जनमानस के साथ चलेगा। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमारा अधिकार है। पंचवर्षीय प्रजातंत्रीय प्रणालिका है। क्या है? पंचतंत्रीय प्रजातंत्रीय प्रणालिका है। प्रचार करेंगे, वादा भी करेंगे। हमको इन सबको आकलन करना है, क्योंकि ये शोर भी करेंगे। मतदान मेरी संवैधानिक शक्ति है। मतदान मेरी संवैधानिक शक्ति है। मेरा अस्त्र है, मेरा शस्त्र है। गलत का सिर झुकाना है। क्या करना है? गलत का सिर झुकाना है। फिर बोलिए, क्या करना है? सच्चे को प्रजाहित से बचाना है। सच्चे को प्रजाहित से बचाना है। लोकतंत्र को बार बार जिताना है। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है, क्योंकि ये हमारा स्वाभिमान है। अब मैं इंग्लिश में कुछ बोल दूं, बोलने के लिए पैनल में भी बहुत आर्टिकल भी मिलता है, आर्टिकल का नंबर भी मिलता है। लेकिन जैसे मेरे स्टीफन साहब ने कहा, डॉक्टर स्टीफन ने सही कहा कि जब तक हम उस धरातल पे नहीं जाएंगे। आज किसी ने प्रश्न किया पहले पैनल में, क्या भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है क्या? सच ये है कि नहीं मालूम है? तो बोले किसको नहीं मालूम है? बोले गांव में नहीं मालूम है। मैं बोला आप कुछ गलतफहमी के शिकार हो गए। गांवों में कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, पढ़े लिखे को मालूम नहीं है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है उसके पास एक ही चीज होती है, क्या? मैं पढ़ा लिखा हूं। अंग्रेज मर गए, इंग्लिश छोड़ गए। थोड़ा और अलग से बोलूं, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए। आज तक हमने 21 भाषा को लेके आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनता हूं तो दुख होता है कि हमारे लिए एक राष्ट्रभाषा हम बात नहीं कर सक रहे। हम आज भी लड़ रहे हैं 75 साल के बाद कि भैया कौन सा भाषा ठीक है। अरे भैया एनईपी बनाई, प्रधानमंत्री ने उसको बोला इसको आगे ले चलो, सब अपनी अपनी भाषा में बोलो। फिर भी हम उस कुत्ते की दुम की तरह हैं, हम इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं, इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं, इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं। गांव में कैसे जाएगा इंग्लिश? हमारे गांव में जाएगा तमिल, हमारे गांव में जाएगा तेलुगु, हमारे गांव में जाएगा मराठी, हमारे गांव में जाएगा हमारी दूसरी भाषा है। जब तक हम ये ना समझे कि पल्स गांव में है,
तो गांव में पहुंचे कैसे? पहले अपना भाषा सुधारिए, इंग्लिश में बोलना छोड़िए। It's a privilege to speak on the theme that is constitutional pathway for social justice. मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप कुछ हंसे और अपने आप पे भी हंसे, मुझ पे भी हंसे, हम सब पे भी हंसे। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हरिवंश राय बच्चन ने बहुत साल पहले कर दिया था। मैं ज्यादा कविताओं में डील करूंगा। एक गलत कदम हमने उठाया, हमने ये फिक्स नहीं कर सके कि हमारी भाषा क्या होगी। उसका नतीजा क्या निकला? रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, एक दुनिया डूब जाती क्योंकि रक्त की दो बूंद गिरती। ये जो रक्त की दो बूंद गिरी, फिर मैं बोलता हूं, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूबी। हमने डुबा दिया है देश को। हम बनाने चले थे, हम डुबा दिए, क्योंकि अभी भी हम में वो हेजिटेशन है। आप इस हॉल में कितने लोग हैं? यहां देखिए कितने हैं? जितने भी थे लंच में वहां गायब है सब। यहां जितने भी थे लंच में सब गायब है यहां, क्योंकि सीरियसनेस खत्म हो गया। एक बार फिर से इस देश को सीरियस होना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि पैनल डिस्कशन आगे बढ़े, सीरियसली बढ़े, गांव गांव को चले, हम सब मिलकर बनाएं हमारा नया भारत, विकसित भारत। इसलिए मैं आखिरी में 4 पंक्तियों से क्लोज करता हूं। मेरे सपने का विकसित भारत, मेरे सपनों का विकसित भारत विश्व गुरु कहलाएगा। हर नागरिक शिक्षित होगा, भेदभाव मिट जाएगा। आत्मनिर्भर बन मेरा भारत दुनिया पर छाएगा। नारी को सम्मान मिलेगा, लिंग भेद मिट जाएगा। नई तकनीक को कायम करेगा, हर क्षेत्र में अव्वल आएगा। मेरे सपनों का भारत, विकसित भारत खुशियां लेकर आएगा। आइए हम सब मिलके आने वाले 25 साल में हर घर में बाइबल, कुरान, भगवत गीता, रामायण, महाभारत तो है, उसके जगह में ऊपर में लेके आके रखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, तब जाकर सुधार होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. We went to trans. Yeah, we come back to English. Thank you so much for your excellent, emotional, passionate, address on the topic. And now it's my privilege to invite Ms. Kiran Bharadwaj, Advocate, Supreme Court of India. Madam, I request you to share your thoughts. Esteemed members over here, respected seniors, distinguished scholars and fellow citizens. It is my privilege to address this august gathering on this national conference celebrating the indomitable spirit of our living constitution as India marks 75 years of democracy, dignity and development. Before that, I must feel very proud that today I was enrolled as an advocate and completed my 33 years of practice. So the Constitution Day for the nation, for me, for everyone, for all lawyers over here. And we celebrate throughout India this great day and this memorable time over here with you people, with your dignitaries over here. I really feel very proud and happy to be here, and especially thanks to Ministry of Social Justice over here. I'm also a government panel advocate senior over here on behalf of Ministry of Social Justice also in Supreme Court.